Hello everyone and welcome to my class. We are doing the first chapter of class 10th history, that is the rise of nationalism in Europe. And this is my concluding video. I'll be discussing the last topic of this chapter, that is the visualizing the nation. See, since so far in the previous videos I have discussed about how the modern nation states formed in Europe, right? From monarchies, now the nations were formed, right? Nationalism led to the building of nations in the 18th 19th century. Now when a nation is formed, it needs to be represented through a common symbol. When we have discussed about the French Revolution, we had a discussion on people adopting new symbols to build a unity among the people of a nation, right? So similarly, artists in the 18th 19th century, they also adopted a new style of representing the nation. They started doing personification of a nation. This is called एलेगरी, पर्सोनिफिकेशन, यानी नेशन को एक इंसान की आकृति दे देना. एलेगरी इज बेसिकली डूइंग पर्सोनिफिकेशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट. किसी निर्जीव वस्तु को अगर हम, या किसी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को अगर हम कोई रूप दे देते हैं, कोई आकृति दे देते हैं, तो उसको हम एलिगरी कह रहे हैं. So this was done during this time in 18th 19th century. Artists are making the allegory of the nation. Remember, we have started the chapter with a painting of Frederick Seriou, and in that we have discussed how he depicted the idea of liberty, republic, democracy, राइट. सो सिमिलरली एलेगरी जो वर्ड है वो नेशन को रिप्रेजेंट करता है, या एलेगरी जो है वो किसी भी वस्तु को जो हम पर्सोनिफाई करते हैं, उसको इंसान का रूप दे देते हैं, तो उसके लिए एलेगरी वर्ड यूज़ किया गया है, राइट. जैसे जब हम बोलते हैं भारत माता, तो हमारे दिमाग में इंडिया का मैप विद अ लेडी स्टैंडिंग इन वेयरिंग साड़ी एंड होल्डिंग फ्लैग, यही सब नज़र आता है. So this is our imagination of our nation. Similarly, the people in Europe, they also personified their nation. जब हम बोलते हैं justice, law, तो हमारे दिमाग में आता है कि lady standing with a weighing scale in hand, blindfolded, standing in having weighing scales in hand. तो इस तरह से हम सिंबलाइज करते हैं किसी भी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को, किसी सिंबल से, किसी पर्सोनिफिकेशन कर देते हैं उस आइडिया को. तो ऐसे ही इस समय पे आर्टिस्ट जो है वो नेशन को पर्सोनिफाई कर रहे थे. तो मरियाने इज एन एग्जाम्पल ऑफ फ्रेंच नेशन. अगेन अ फीमेल फिगर होल्डिंग सॉर्ड इन हैंड. ये जो है फ्रेंच नेशन को डिपिक्ट करता है. जब मेरियाने फिगर को बाद में एक सिक्कों में यूज़ करने लगे, जो करेंसी थी उसमें यूज़ करने लगे, जगह जगह इनके स्टैचूस बनाए जाते थे, चौक में, स्क्वायर्स में, right? So that people when they see the symbol, they feel that they belong to this nation. This is their nation that makes them one, right? Similarly, Germania is an example of German nation. A lady standing with a sword in hand, with flag, and wearing an oak leaf crown. Oak leaves crown is generally depicts the heroism. हमने थ्रू आउट फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान भी ये चीज़ें पढ़ी कि सिम्बल्स प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. कोई सिंबल लिबर्टी को शो कर रहा है, कोई इक्वालिटी के लिए यूज़ किया गया, कोई जस्टिस के लिए यूज़ किया गया. तो सिमिलरली नेशन को जब सिम्बलाइज किया गया, तो उनका पर्सोनिफिकेशन किया गया नेशन का. जर्मेनिया एंड मरियाने इज एन क्लियर एग्जाम्पल ऑफ द एलेगरी मेड फॉर German and French nation, right? So this is these symbols, these allegories were used
when the people were fighting for their rights, when they made a unified nation to symbolize their nation, right? So with this we have finished this chapter. This is a very small topic, but one mark question comes on allegory, or in exam they might ask for Germania, examples of Germania and Marianne, which symbol which allegory was used for French nation or German nation. Like these, one mark question comes on allegory and on these examples, right? So do not miss any information which is given in the book. Go through the points, and make your notes. Please like, share and review, and please wait for the next video. Thank you.